And I find that at some moment in time, the position vector of the ant is given by r, t, and the position vector of the ant after an interval of time dt is given by this expression, right? Sir, vi So, and vi plus can dt you by hear us? dt. I can hear you. सर आप नहीं सुन सकते ना हमें? सर मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं सुन सकते सर हमें शायद। फिर से बोलो। सर सर, मेरी आवाज आवाज? आ रही है सर? हाँ है ना सर? फीडबैक लूप मालूम है किसी को क्या होता है? हाँ सर। चैट पे लिखो सर, नहीं सुन पा रही हैं। नहीं यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। सर वापस बोलेंगे, आया नहीं बात। Off because I'm switching it off from. So हाँ, earphones मैंने यूज करूंगा because I don't feel comfortable in using earphones. Whenever you want to speak, I will damping material. So whenever you want to speak, I'll switch on the loudspeaker of the. मैं ये explain करता हूँ फिर मैं उसको on कर दूँगा. So at this moment in time, there is some velocity vector of the particle given by this vector, which I will call the velocity vector at time t, and then we have the velocity vector of the particle at time t plus dt, okay? So now we define acceleration, the acceleration vector as the velocity at time t plus dt minus the velocity at time t whole divided by dt. Okay, and as you know, this is basic calculus. So this will be dv by dt. Any doubts? सर आपने वेलोसिटी वेक्टर कैसे ड्रॉ किया? लाइक आपने वो जो कैलकुलेशन जो आपने किया था, लाइक पहले आपने वो ट्रायंगल लॉ बनाया था, वो दोनों बनाए थे, तो आपने डायरेक्टली कैसे बना दिया वेलोसिटी वेक्टर? मैं आवाज फिर से बंद करने जा रहा हूँ. आवाज की किसी को जरूरत नहीं. क्या मतलब है वेलोसिटी वेक्टर कैसे बनाया? तब से तो बना रहा हूँ. टेंजेंशियल होता है कि नहीं पाथ से वेलोसिटी वेक्टर? कैसे बनाया? बताया था कि नहीं लास्ट क्लास में? वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल. यस सर. तो मैंने एक वेक्टर बनाया जो उस पाथ के टेंजेंशियल है उस पॉइंट पे. ये वाला वेक्टर इस पॉइंट के टेंजेंशियल है, ये वाला वेक्टर इस पॉइंट के टेंजेंशियल है. खत्म हो गया. कैसे बनाया कि क्या मतलब? Okay. So this is the definition of acceleration. तो इसमें वैसे t square 3t type आएगा. हाँ बिल्कुल. Yes, yes, absolutely, yes. So what is the meaning of velocity as a function of time? Remember, I told you that it is a vector and a function.
So what you have learned in a vector and what you have learned in a function are both present here, right? So an example of velocity vector as a function of time would be, if I want to scare you, would be 5e raised to the power minus 2t. For example, I cap plus 3t j cap plus 5 k cap. This would be the this would be an example of the of a velocity vector, right? It is a function of time and it is a vector quantity. Okay. सर ठीक है. अच्छा अच्छा ठीक है, रुको, मैं हेडफोन लगाता हूँ. सैक्रिफाइस जो मैं करता हूँ, ले आ भाई. रुक जाओ. कहाँ से कनेक्ट होता है ये? उधर ही कंप्यूटर से कनेक्ट होएगा या मेरे मेरे मोबाइल से कनेक्ट? हाँ, उससे होएगा सर. है नहीं आता दर्द तो छोड़ दे, तब नहीं हो पाएगा. फिर कैसे होएगा जब आता है? सेटिंग में जाके छोड़ दे, अगली क्लास में करें. छोड़ दो. है 2 मिनट में हो जाएगा. ला, मैं अपने मोबाइल से कर देता हूँ. हाँ भाई आद्विक, दिखाई दे रहा है तेरा चैट. इसको कैसे ऐसे ऐसे ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होता है भाई, बताओ जल्दी. सेटिंग्स, कनेक्शन, ब्लूटूथ. तो ये ऑन कैसे होएगा? तो मेरी घड़ी आ रही है सिर्फ इसमें. नो डिवाइस फाउंड. सर ऑन कैसे करते हैं देखना. ऑन कहाँ है? सर उधर एक पावर बटन होगा. सर सुन नहीं पा रहे हमको. हाँ वही कोशिश कर रहा हूँ. ऑन है. अबे टाइम इतना वेस्ट हो रहा है यार. सर छोड़ दो सर, आप सिखा दो. अच्छा लोटस खारगर आया. सर ईयर प्लग्स में कोई तरीके दो की तो ये है लाइट ना. चालू होगी शायद, ब्लू या ग्रीन. आदविक सर सुन नहीं सर सकते. सुन नहीं सकते. इससे पास में क्या रखे है? छोड़ दे, टाइम वेस्ट हो रहा है. मेरे को पढ़ा लूंगा मैं. So I will ask HM sir to guide me and then I will come back with the Bluetooth wala. Click on pair a new device. वही किया था मैंने.
से फिर वाट लग गई। चलो आज चैट से काम चला लो, नेक्स्ट क्लास में फिर वॉइस करेंगे। Okay, so this is an example of velocity as a function of time. Of course, this is a convoluted and very difficult example. In reality, it will be something like v is equal to t square I cap plus tj cap, or 2t I cap plus 3j cap, something like that, something very, very simple, right? Ha, e raised to the power I into 2 hai ye, 2. Does not have to be pi. 2, something like that. Okay, just an example, just an example. Can I write that? Cos that becomes -1. No, it does not become -1. E raised to the power pi t will become -1 at e raised to the power I pi t. Iota बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, iota does not come into come here, because that represents imaginary quantities and this velocity component is not imaginary. Okay, so this is instantaneous acceleration. Now what we are capable of doing is that we are capable of understanding any type of motion, right? But this assumption would be the same as कि मैं किसी बच्चे को ABCD सिखा दूं और फिर बोलूं now you are capable of understanding Shakespeare, right? ऐसा नहीं होएगा. So there are of course stages of understanding, but this is ABCD, this is the basics, right? हमने क्या क्या देखा? हमने देखा point particle, okay? हमने देखा आज, by the way, सबका homework है कि class work सबको submit करना है. पूरे हफ्ते का class work everybody will submit on the app. Okay, I will create a homework on the app and you have to submit your classwork for Monday, Wednesday and Friday. It will be checked and it will be जब सेंटर पे आएंगे तो करेंगे ही, बट केवल उसका PDF बना के अपन को अपलोड कर देना है so that it can be checked. केवल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का, केवल मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. Only what you have written in your copies on Monday, Wednesday, Friday, right? The deadline will be today evening and then it will be repeated every week so that I can keep track of what you are writing in your because अब मैं notes maintain नहीं कर रहा हूँ ना, इससे पहले तो मैं notes maintain कर रहा था, अब आपको करना है. It's your responsibility now. Okay, so now we are in a position, what we have learned. Point particle का क्या concept होता है? We have learned. Frame of reference क्या होता है? We have learned पीछे से आवाज आ रही. We have learned what is the position vector. We have learned what is the displacement vector. We have learned what is the distance. We have learned what is the average velocity vector. We have learned what is the velocity vector. We have learned what is speed. We have learned what is average speed. We have learned what is average acceleration. And we have learned finally what is acceleration, right? So these are the concepts which are required to understand the motion of any object, right? Now, as you are aware, the motion of an object is, sir, in the last, y velocity vector is tangentially to position vector. अबे position vector से नहीं tangential होता है, वेदांत पागल हो गया है फिर से. Path of the particles, अपना notes पलट पिछले वाला. path से tangential होता है. It is tangential to the path of the particle. Okay, so after learning all these concepts, we are in a position now to understand the motion of particles. And as you know, the motion of particles is a very, very difficult
or can be very complicated concept, right? So for example, if you are studying the motion of, let's say, a particular comet, then the motion is very, very difficult to describe because the motion is along an ellipse, and you do not know as of now what is how to deal with the maths of a particle moving in an ellipse, right? So you will not be able to do it, but the concepts, they remain the same, right? So what we will do is, just like I talked about a point particle being a idealization of the real world, what we will do is we will get rid of the complications that exist in the motion of a particle, right? So what are the complications that exist in a motion of a particle? The complications that exist are that the motion of the particle may be one-dimensional, two-dimensional, three-dimensional. Three-dimensional motion, of course, will be most difficult to describe. Okay. So let me just break it down. Let me just write it here. So the types of motion. So the types of motion will be one-dimensional, two-dimensional, or three-dimensional. Okay, they may also be, now this is a separate classification. So other kind of types of motion. So this is a separate classification. This may be zero acceleration, constant acceleration, and variable acceleration. Okay. So friction and other unbalanced forces, they do not allow. So we will not consider friction. क्या रिपीट करना है बच्चा बताओ? मैं केवल ये बोल रहा हूँ. All I am saying is that there are three types of, there are various classifications of motion, right? You can classify motion in a variety of ways. The three types of classification are that the motion can be one-dimensional, two-dimensional, or three-dimensional, right? So this would be one-dimensional motion. Okay, this would be one-dimensional motion, only along the y-axis. Okay. This would be two-dimensional motion. Okay. And if I throw it like this, so that it is going here, then this would be three-dimensional motion, right? It is rotating as well, right? So hum rotation, we are not looking at rotation. The rotation is beyond us right now. जब मैंने पेन को फेंका, we consider it as a point particle. Okay. Can you increase handwriting size? Oh, I'm so sorry. Okay, sorry. So इसमें क्या नहीं आ रहा है? ये मैंने लिखा है types of motion, 1D, 2D, 3D, और मैंने यहाँ पे लिखा है other kind of types of motion. So there are basically two types of classification. Okay. And that is zero acceleration, constant acceleration, and variable acceleration. Okay. ठीक है ना अभी? हाँ. वेदांत ने सवाल पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन 2D डायमेंशन मोशन.
अबे 2D डायमेंशन नहीं होता है, 2D मोशन होता है। 2 डायमेंशन, D का मतलब डायमेंशन। ऐसा मोशन जिसमें कि पार्टिकल का x और y दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हो, उसको 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ऐसा मोशन जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हो, उसको 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। और ऐसा मोशन जिसमें केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, उसको 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, राइट? ओके, so what we are going to do is, of course, if you look at this, can anybody tell me what kind of motion this is? What kind of motion is this? केवल x coordinate 1.5 d, but okay, so it is 1 dimensional, and out of this, which is, what is the motion? हाँ, so this is, जो अभी मैंने पेन को उछाला, it is 1 dimensional constant acceleration motion. Okay, 1 dimensional can be any, नहीं ऐसा नहीं, 1 dimensional constant acceleration का motion है. Okay, this is 1 dimensional constant acceleration. Okay. Okay. So before we go into this, I just want to थोड़े वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट और हमने जो डेफिनेशंस पढ़े हैं, I just want to refresh them. I just want to give you some more questions on them, right? So that we are absolutely prepared to deal with the various types of motion, right? So when we deal with 1-dimensional motion, things will become very easy. When we deal with 2-dimensional constant acceleration motion, things will become थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा. 3-dimensional motion we generally don't deal with. We'll stop at 2-dimensional motion, right? Variable acceleration, we will only deal with 1-dimensional variable acceleration. We will not go into, although I will show you that dealing with 2-dimensional motion is nothing but an extension of whatever we do in 1-dimensional motion. Okay? If pen is just a straight collection of points of which the ends are perpendicular to the ground, then 3D motion will be no problem. As what we are in 3D, we will do D, 3D. No. Your assumption is based on the fact that the pen is not a point particle, right? And like I have said, we are not in a position to discuss anything or any motion of an object which is not a point particle. All the definitions that I have given you, right? All the 10 definitions that I have described, they are all for a point particle. They do not, okay, they do not extend or they do not apply to this pen. Okay, I mean, I can sort of वो एक बहुत पुराना शायद जोक है, I don't know whether you heard of it or not. वो किसी फार्मर के फार्म में क्या था वो, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. काऊ बीमार हो जा रही है कुछ ऐसा, तो एक फिजिसिस्ट को गलती से बुला देते हैं. तो फिजिसिस्ट आता है और बोलता है, हाँ, आई हैव फाउंड अ सॉल्यूशन, बट वी हैव टू अज्यूम दैट द काऊ इज स्फेरिकल, राइट? It is something like this. So I can describe the motion of the pen to you. We can describe the motion. We can talk about the motion of the pen, but we have to assume that the pen is a point particle. It is not an extended object. Okay.
point particle है, then it can be in 2D only, cause plane. No. Point particle can move in three dimension also, right? Look. यहां से ये पेन मूव करना शुरू कर रहा है और यहां पे आ रहा है, right? So this is three-dimensional motion because the x-axis changed, the y-axis changed, and the z-axis also changed. Z-coordinate also changed, right? So this is three-dimensional motion. In fact, three-dimensional motion is easy. I'll just let me give you a question. Okay. So the question is that a particle starts to move from point A, okay, 2, -2, 1 towards point B, which is this is 3, 2. So this is 1, -1, -1. With speed 3 meters per second. Find velocity vector. Okay, so this is three-dimensional motion. Why? Because its x coordinate is changing, y coordinate is changing, and z coordinate is changing. Right? But it is moving with a constant speed. कौन सा मोशन है ये? Three-dimensional zero acceleration. Right? This is three-dimensional zero acceleration. Remember that I have asked you something. Okay? This something has a definition. Right? Write that definition down. And then you ask yourself कि अब मेरे को क्या नहीं आता है? Will it be 6i cap plus 3j cap minus 6k cap? नहीं. हाँ, आई थिंक प्रसून ने आंसर निकाल दिया, लेकिन प्रसून माइनस होएगा कि नहीं होएगा मेरे को नहीं मालूम है. फिर से एक बार देखना. अच्छा, हाँ, सही है. सदगुण तूने एक मिस्टेक किया हुआ है. यज्ञेश आंसर गड़बड़ है, वत्सल का आंसर सही है. Okay, let me change the question slightly. Maybe that is the reason why there is confusion. Okay? With a constant speed of 5 meters per second. Okay? So you can take it as part 1 and part 2. एक बार 3 meters per second और एक बार 5 meters per second. Take it as both the values.
Can you tell me what the velocity vector of the particle will be? कौन सा concept? कौन सा? Tanish, कौन सा? Aja, concept of this question. Aja, okay. So a particle starts to move from a particular point, 3, minus 2, 1 meters, and it is moving towards the point 1, minus 1, minus 1 meters. Okay? So obviously, if we make a coordinate axis somewhere, so the particle is moving from point A to point B, right? It is moving like this. So you have to find the velocity vector of the particle, given that the speed of the particle is 3 meters per second constant, or the next part of the question, 5 meters per second constant. Very good. Yes, that is the. We will have to differentiate. Okay. No, not necessarily. Try it out. I'll give you a minute or so, and then I'll tell you the answer. अर्नव, दोनों में आंसर सेम आएगा? हाँ वत्सल, exactly. 3 meter per second. Yes, Sadhgam. Yes, it will give you. No, it will not give you the position vector. It will give you the displacement vector, beta. हाँ, वेदांत तेरा साइन गड़बड़ है आंसर का, बाकी सही है. Three speed is constant for all axes. Nahi beta. 3 is its speed. That means the magnitude of velocity is 3. Or in the second part, magnitude of velocity is 5. Vedant Sharma, absolutely right. Arnav, absolutely right. Vedant J, तेरा आंसर गड़बड़ है थोड़ा सा. Okay, chalo. So for those of you who are sort of, lost, अरे ये कैसे करेंगे? Please let me warn you that this will be a common, this will be a very, very common thing in physics for you, right? Especially when you learn a new topic. जब क्वेश्चन पे आए तो मुंह खुला का खुला रह गया. ये क्या है, ये क्या लिख दिया है, ये क्या, what is this? How do I even proceed? I don't even know the first step. This is a very common thing, right? But remember what is happening. You are learning something scientific. Okay? People don't talk about acceleration vectors and velocity vectors and calculus. And we don't talk about this in our daily lives. These are highly technical things that you are learning, right? If you are understanding this, this is absolutely excellent if you are understanding this. So whenever you learn something new and you have to apply it, it is very, very difficult. Okay? The best example that I can give is learning a new language. I don't know how many of you are learning a new language. जिन्होंने पहले से बचपन से जिनको लैंग्वेज आता है वो अलग बात है, right? So many of you must be speaking 3 languages, 4 languages. Some of you may be with
some of you may be having a fluency with 5 languages, right? That shows excellent intellectual capacity. The more languages you learn it tells us that your brain is actually very active. But if you start learning a new language now, I don't know how many of you in class 10th learned a new language, for example, French or German, right? So I've been through that. I've learned French and German when I was in school. And I found that to speak French was very difficult. To speak German was very difficult, right? We are learning something new and we are supposed to apply it. Now I know how to say, my name is Kunal in English, I know Hindi, but French में जब मैं बोलने आऊँगा तो बिल्कुल change हो जाएगा, right? It will be, I don't know how many of you know French, but it will be Je m'appelle Kunal, right? So the words have completely changed. There is no similarity of the words, and this is what is happening here as well, because there is no similarity of words with your normal daily language. Therefore, you will find it tough. Whenever that happens, I find that I need some patience. I need some. I need to sort of take a step back and understand, why am I not able to do this? The difference between this and a language is that a language is sort of arbitrary, right? तो अगर इंग्लिश में वो वर्ड है नेम, तो हिंदी में है नाम, तो तमिल में कुछ और होएगा, बिल्कुल अलग होएगा, और किसी और लैंग्वेज में बिल्कुल अलग होएगा. ये आर्बिट्ररी है, because you know somebody has developed a language and they have named something, so that is arbitrary. But this is scientific. This is much easier than learning a new language. Okay. सतगुण को तो क्या गूगल ट्रांसलेट लगा के रखा है क्या? हाँ. We will use speed is equal to distance upon time, then proceed. No. Speed is equal to distance upon time. No, I don't want to do that. Okay, I'll show you how I understand this. So I have maintained that whenever you read a question, the first thing that you must read must be what is to be found. Okay, so in this case, find V. The moment you have pinned down what you want to find, okay, you write the definition of that thing. V is equal to क्या है? What is the definition? What is the definition? Okay, good. French किया हुआ है सबको. Very good. तो V, what is the definition? वापस physics पे सबको. What is the definition of V? What is the definition of V? नहीं, it is not displacement upon time. Displacement upon time is the definition of average velocity. We are talking about instantaneous velocity. Although in this case, it will be same. That is why you guys are getting the correct answer. So this is something new I want to show you. Maybe some of you have done it in this way. But something new I want to show you. Okay? So what is V? What is V? हेलो सर. सर का स्क्रीन पॉज हो गया. हाँ सर. सर का स्क्रीन पॉज हो गया है. सर हमें सुन नहीं सकते लेकिन शायद. सर को हाँ. कॉल करके बताना पड़ेगा. कॉल करूं मैं? कर ले. नहीं तो मैसेज डालना हाँ पड़ेगा. कर. और ग्रुप पर भी मैसेज डाल दो अगर सर ग्रुप देखे तो. सर डिस्कनेक्ट ही होगा. डिस्कनेक्ट हो गया. ओ अच्छा, पावर कट हो गया.
क्या हो गया? अच्छा पावर कट power cut। तो अब हमें लीव करना है क्या? नहीं रुक जा, आ जाएगा वापस पावर। सर आ गए शायद से वापस, पोस्ट बन गए वो सर। वो सर नहीं फोन नहीं से थे नहीं, वो है। वो तो पहले से थे। वो तो जील सर एकेडमी फोन होना से चाहिए। है, जील हाँ, एकेडमी जील होना चाहिए ना। एकेडमी था। अभिनव ये क्वेश्चन कैसे किया तुम लोगों ने? मुझे नहीं समझा। मेरा भी नहीं आया आंसर अभी तो। सर का डेफिनेशन के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर सॉरी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर किया था ना सर ने, अपॉन तो हाँ टाइम। फाइनल पर वो सर ने पोजीशन बोला कैसे कि निकाला? गलत है। मतलब ठीक है, सर ने बोला इंस्टेंटेनियस का लगेगा dx/dt जो भी है, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन के लिए कोई वो ही नहीं है टर्म वगैरह हमारे पास। डिफरेंशिएशन नहीं करना ना, सर वेलोसिटी ने इक्वल टू इंस्टेंटेनियस बोला डिफरेंस ना। इन, हाँ नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंस इन द पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम। भाई तो देख, हमारे पास मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखी है, और एक स्पीड दे रखी है, ऐसे तो पोजीशन नहीं कैसे हमारे पास टाइम निकालेगा? नहीं है ना, लेकिन सब कुछ हो जाए वो फाइनल पोजीशन हाँ हाँ हाँ, टाइम निकालने के लिए। मेरे को ऊपर वाला आ गया, बट नीचे टाइम कैसे निकाला वो बताओ। 3 का आंसर दिया डिवाइड किसने? बाय 3 होगा, क्योंकि वो होता है ना वो वो टाइम नहीं है। वेक्टर स्पीड हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें एक्चुअली में वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, तो हमें डिवाइड बाय v करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, और फिर टाइम को वैसे कर दिया, डिस्टेंस को इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लेके टाइम 1 सेकेंड आया। लेकिन भाई तेरा डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट में तेरा डिस्टेंस है क्या? अरे वो ही, अरे वो मारना क्या बोलते हैं, जब ये कोऑर्डिनेट्स। 2 3 माइनस 2 1 है तो उसका निकालना वेक्टर का। अच्छा हाँ। डिफरेंस। हाँ, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर, तो वो 9 आ जाता है, तो वो 3/3 1 ले लिया मैंने। बट आई थिंक वो आंसर नहीं, मेरा -2 i कैप प्लस j कैप -2 k कैप। वही आंसर है। वही आंसर है। अच्छा ठीक है। मेरे को अभी भी नहीं समझा यार, कैसे निकाला तुम लोगों ने डिस्टेंस? अरे वो रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर आई कैप प्लस y2 माइनस y1। अच्छा वो वो डिस्टेंस है। फॉर्मूला वगैरह से। हाँ वही। हाँ नहीं लेकिन भाई तुम, अच्छा यूनिट्स पे तुमने यूनिट्स में लिखा होगा कोई, मतलब मीटर वगैरह नहीं है हमारे पास। उन्होंने टाइम कैसे निकाला वैसे? अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम ना, इक्वल तो टू मैं डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम टू लगाया ना। डिस्प्लेसमेंट ले लिया, उसका फिर वैल्यू निकाला, फिर वो वैल्यू डिवाइडेड बाय जो हमें स्पीड दिया था उसे डिवाइड करके टाइम आ जाएगा ना। वन डायमेंशन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वैसे भी एक ही होता है, तो मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं वो 2 डायमेंशन है ना अद्विक। फाइनल आंसर क्या है? अच्छा मेरे 3, को अच्छा ठीक -2 है। i कैप प्लस j कैप -2 k कैप। हाँ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं गाइस। ठीक है, अभी तो लग तो नहीं रहा है कि पावर आएगा। ओके सर। ओके ठीक है ना, आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ 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 जी आ सर, रहा आ रही है। है। हाँ ओके सर, सर। ठीक है तुम लोग का आवाज क्यों नहीं हाँ आ सर आ रहा रही है? है आपकी। थैंक यू सर। आ रही नहीं है। कर पा रहा क्या? सर अपना सर अपने वॉल्यूम ऑफ करके रखा हो, बढ़ाइए। हाँ हाँ